हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर्सनल ट्यूटर में। मेरा नाम है ऐश्वर्या शर्मा एंड मैं आपको पढ़ाऊंगी चैप्टर 14 एलिमेंट्स कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स के एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हु आर माय कंपेनियंस। तो यहाँ पे मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है। ग्रुप ए दिया है, ग्रुप बी दिया है, तो इसमें हम डायरेक्टली आंसर्स में आ जाते हैं। ग्रुप ए में है स्टेनलेस स्टील, जिसका आंसर होगा ई एलॉय, एलॉय से बनता है। देन सेकंड सिल्वर, जिसका आंसर होगा एफ मेटल। देन थ्री भजनी मिक्सचर फॉर मिलिंग, दैट विल बी सी मिक्सचर। देन फोर्थ सॉल्ट, that will be B compound. Then fifth coal, that will be A non metal. And sixth hydrogen, that will be D element. Now question number second is, write the names of elements from the following symbols. So ये चैप्टर जब आप पढ़ेंगे तो इस चैप्टर में एक चार्ट दिया हुआ है जिसमें आपको सिंबल्स दिए हुए हैं। तो फर्स्टली आप उस चार्ट से देखकर भी आंसर लिख सकते हैं। Zn will be zinc, Cd will be cardamom, Xe will be xenon, Br will be barium, Ti will be titanium, Cu will be copper, Fe will be iron, Si will be silicon, Ir will be iridium, Pt will be platinum. So question number third is, what are the molecular formula of the following compounds. इन compounds के आपको molecular formula बताने हैं। हाइड्रोक्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, सोडियम क्लोराइड, ग्लूकोज और मिथेन। सो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का HCl, सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4, सोडियम क्लोराइड का NaCl, ग्लूकोज का C6H12O6, देन मिथेन का CH4। नाउ क्वेश्चन नंबर फोर्थ, गिव साइंटिफिक रीजंस। आपको इसके साइंटिफिक रीज़न बताना है कि ऐसा होता क्यों है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, बटर मिल्क इज चर्न टू गेट बटर। बटर मिल्क हैज़ टू components, water and fat or cream. Churning helps in the separation of these two components. सो क्या होता है, बटर मिल्क में दो चीज़ें होती है, पानी होता है और फैट होता है। जब हम उसे चर्न करते हैं तो क्या होता है, ये दो कंपोनेंट्स अलग अलग हो जाते हैं। द फैट क्रीम कलेक्ट्स ऑन द टॉप एज अ रिजल्ट ऑफ चर्निंग, व्हाइल द रिमेनिंग पार्ट इज लेफ्ट बिहाइंड एज लिक्विड। जो फैट क्रीम होता है ये ऊपर क्या होता है, जम जाता है चर्निंग के कारण, और बाकी चीज़ें जो हैं वो लिक्विड की तरह रह जाती है। तो इसीलिए जो फैट क्रीम होता है उसका फॉर्मेशन होता है, जिसे कि हम कहते हैं बटर। देन बी इज इन chromatography the ingredients of a mixture rise up to a limited height, water rises up to upper end of the paper. Chromatography is separation technique used to separate different components in a liquid mixture. So chromatography एक ऐसी टेक्निक होती है जहाँ पे दो कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है किसी लिक्विड मिक्सचर के। सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस बाय क्रोमेटोग्राफी इज बेस्ड ऑन टू प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सब्सटेंसेस। तो ये जो सेपरेशन होता है क्रोमेटोग्राफी में, ये किसी भी सब्सटेंस की दो प्रॉपर्टी पे डिपेंड होता है। Firstly, solubility of the substance in the solvent that moves up, and second is ability of the substance to stick to the stationary filter paper. Now these properties are different for different substances and are mutual opposite to each other. It is the reason why all the components of the mixture rise up to a limited height when water rises up to the upper end of the paper. तो ये जो प्रॉपर्टी होती है, दो प्रॉपर्टी, ये हर सब्सटेंस की अलग होती है पर एक दूसरे से अपोजिट होती है। इसी कारण से जो मिक्सचर होता है वो कुछ हाइट तक ऊपर आ जाता है और जो वाटर होता है वो राइज होके अपर एंड ऑफ द पेपर में आ जाता है। नाउ सी क्वेश्चन इज, अ वेट क्लॉथ इज रैप्ड अराउंड अ वाटर स्टोरेज कंटेनर इन समर। कोई किसी भी चीज़ में हम गर्मी के मौसम में ठंडा पानी रखना चाहते हैं तो उसके पास स्पेशली मटके में हम ऐसा करते हैं कि उसके चारों ओर हम गीला कपड़ा बांध देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं?
A wet cloth is wrapped around water container in summer to keep the container and the water inside it cool. The water present in the cloth evaporates, and along with that water, the heat also evaporates, thus keeping the container and water cool. तो हम जो गीला कपड़ा होता है उसको चारों ओर कंटेनर के इसलिए लगा देते हैं समर में, ताकि जो कंटेनर है और उसका जो पानी है वो ठंडा रहे. जो पानी होता है इन द क्लॉथ इवापोरेट्स, वो धीरे धीरे उड़ते जाता है. वाटर, along with that water the heat also evaporates, और साथ साथ जो हीट है उसकी वो गर्मी भी इवापोरेट होती जाती है. इस कारण से जो कंटेनर का पानी रहता है वो ठंडा हो जाता है. नाउ क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन द डिफरेंस ए मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. Metals, they can be beaten into sheets and wires. Metals are sonorous, they produce a ringing sound on beating. They conduct heat and electricity. Metallic oxides are basic in nature. Metals react with water. Metals react with acids to produce hydrogen gas. अब इसका हमें इसे डिफ्रेंशिएट करना है नॉन मेटल से, तो उसे देखते हैं. Non-metals, they cannot form sheets or wires. They are non-sonorous. Non-metals do not allow heat and electricity to pass through them. Oxides of non-metals are acidic. Non-metals do not react with water. They generally do not react with acids. Next difference आपको बताना है mixture and compounds का. Mixture, it is obtained by physical combination of the substances. The composition of the constituents present are not fixed. It displays the property of all its constituents. The constituents of a mixture can be separated. No change of energy is involved during the mixture. Now compounds, it is formed when two or more substances chemical combine in a fixed ratio. The composition of elements present in compound is fixed. It may or may not show the properties of its constituent elements. The constituent elements of a compound can be separated only by using chemical methods. Change of energy is involved during the formation of compound. Now differentiate between atoms and molecules. Atoms are the smallest particle of an element in a chemical reaction. They do not break up during chemical reactions. They may or may not exist in free state. Molecules are the smallest parts of an element or compound which exist independently. They break up during chemical reactions. They exist in free form. Now last question, the separation by distillation and by separating. Separation by distillation, this method is employed for separation of two miscible liquids. Second, it is based on the difference in the boiling points of two liquids. Second one is separation by separating funnel. This method is employed for separation of two immiscible liquids. And second, it is based on difference in the densities of the two liquids. Now question number 6, write answers to the following questions in your own words. A is, how are the components of mixture separated by simple methods? The components of mixtures are separated by simple methods like distillation. Distillation method होता है जिसमें separation होता है किनका, लिक्विड मिक्सचर्स का. ये एक मेथड होता है विच इज़ यूज फॉर सेपरेटिंग टू मिसिबल लिक्विड्स. इट इज़ बेस्ड ऑन डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ टू लिक्विड्स. Distillation can either be simple or fractional. Simple distillation can be used for liquids which have huge difference in their boiling points, whereas fractional distillation is used in case of liquids which have close boiling points. Separating funnels. Separation using separating funnels is used in case of immiscible liquids. It is based on difference in the density of two liquids. It can be used in separation of oil and water.
और नेक्स्ट है क्रोमेटोग्राफी। ये तो अभी हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था कि इट कैन बी यूज टू सेपरेट द colored components of a mixture on the basis of difference in speed of the components on chromatograph paper when dissolved in the same solvent. The absorbent paper acts as the stationary phase. It carries the components of the mixture on the paper. The mixture acts as mobile phase and components get separated. Then last one is centrifugation. Centrifugation is the process where a mixture is separated through spinning. It is used to separate skim milk from whole milk, water from your cloth, and blood cells from the blood plasma. Now question number 2 is which elements, metals and non-metals, compounds and mixtures do we use in our day-to-day life? Examples of mixtures we use in our day-to-day life are lemon and water, sugar and milk, salt and water, cereal and milk, cement, air, etc. Example of compounds we use in our daily life are salt, sugar, baking powder, vinegar, ethanol, etc. Example of elements we use in our daily life are aluminium, copper, iron, silver, gold, etc. D. Where are the methods of नहीं क्वेश्चन नंबर सी है अब इन एवरीडे लाइफ वेयर एंड फॉर व्हाट पर्पस डू वी यूज़ सेंट्रीफ्यूगेशन? We use centrifugation for the following purposes in our daily life: drying of wet cloths in the spin tub of a washing machine, then extraction of DNA for forensic and experimental purposes, separation of blood components in medical science, working of roller coaster in amusement park, removing water from wet lettuce in salad spinner. Then D. Where are the methods of separation by distillation and by separating funnel used and why? Distillation and separating funnel are used in separation of liquid mixtures. डिस्टिलेशन का मेथड तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको समझाया ही था. सिंपल डिस्टिलेशन क्या होता है, क्या काम आता है उसका, एवरीथिंग. Now separation using separating funnels is used in case of immiscible liquids. It is used on the difference in the density of two liquids. It can be used in separation of oil from water etc. Two different types of immiscible oils etc. किसी की भी separation में इसका इस्तेमाल हो सकता है. Now last E. Which precautions will you take while using the methods of distillation and separation by separating funnel? Precautions to be used during distillation are: the apparatus should be set in a proper manner with all the components fitted well. Next, never heat the system that is totally closed from the outside atmosphere to prevent the explosion. तो क्या क्या आप प्रिकॉशंस लेंगे कि अपैरेटस सही मैनर से होना चाहिए, ज़्यादा गर्म नहीं करेंगे नहीं तो एक्सप्लोजन हो सकता है. ऐड बॉइलिंग चिप्स टू रिड्यूस बम्पिंग means rapid boiling cause the liquid to expel out of the container. Now next, control the rate of heating so not to overheat to avoid bumping, कि बहुत ज़्यादा हीट नहीं हो जाना चाहिए. Precautions to be used while using separating funnel for separation are: the funnel should be tightly fixed to the stand in an erect position. बहुत tightly fixed होना चाहिए. The liquid in the funnel should be left undisturbed to allow it to separate. जो liquid है funnel में वो भी undisturbed होना चाहिए. The stopper should be removed carefully. तो यहाँ आपका आंसर ख़त्म होता है.